Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So for herpes infection, you need to see two things: whether it is primary or it is recurrent. And in primary, you have to see two things: the gestational age, whether it is before 28 weeks or after 28 weeks. Simple. This is the only way you are going to solve the questions. This is the only algorithm you have to put in your brain. That two things, whether it's primary or recurrent, and only in primary you're going to see whether it's before 28 weeks or after 28 weeks. Okay? Because in recurrent, regardless of the gestational, and also one more thing you should know, that there are two kinds of therapies. We do the treatment therapy. ये याद करने के लिए मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, आपने किसी को समझा नहीं देनी. And then we do the suppressive therapy. And treatment therapy is 435, that is 400 mg TDS for 5 days. Okay, 5 days. So you can remember it by 5 working days. And then suppressive therapy is from 32 weeks. Remember the 32 until the delivery. This is the treatment. So now you have to put things in their place. Okay, so if they are saying it's primary, you have to look at the gestation age. If they're saying that less than 28 weeks, then your aim is going to be normal vaginal delivery. If they're saying it's after 28 weeks or 6 weeks before delivery, third trimester, anything like that, your aim is going to be LSCS. Okay, and in recurrent, your aim is going to be normal vaginal delivery. So the aim is going to be LSCS only when it's primary. Look at it, primary infection at gestation age of more than 28 weeks. ये जी है ना, gestational age है, general anesthesia नहीं है, पता चले कुछ और ही खिचड़ी बना दियो. Gestational age, okay, and more than 28 weeks LSCS. तो ये इतना आसान है, एल्गोरिथम आप बना लें, उसको आप समझ लें, आप कोई भी herpes का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो अब क्या ही बात है इस वीडियो की. बट अब आपने ये ट्रीटमेंट फिक्स करना है. ठीक है, प्राइमरी में आपने ये पूरा ट्रीटमेंट देना है, पूरा. रिकरेंट में आपने सिर्फ सप्रेसिव ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वो रिकरेंट है ना, प्राइमरी थोड़ी है, तो आपने उसे ट्रीटमेंट थेरेपी नहीं देनी. मतलब कि प्राइमरी इन्फेक्शन जब भी हुआ है, आपने उसको लेट्स से 18 वीक्स पर हो गया, आपने 435 देना है, मतलब 400 mg 3 टाइम्स डे फॉर 5 डेज, और फिर जैसे ही वो 32 वीक से पहुँचे, आपने उसे 400 mg 3 टाइम्स डे अंटिल डिलीवरी देना है. ये सप्रेसिव ट्रीटमेंट है ना, सप्रेसिव डोज है. मतलब डोज सेम है, लेकिन एक पहला वाला 5 डेज़ के लिए